काकिनी कवचम् अथ षष्ठसप्ततितमः पटलः। श्री आनन्दभैरवी उवाच कथयामि महाकाल चात्यन्ताद्भुतसाधनं कवचं काकिनी देव्या अष्टोत्तरशताक्षरं यस्य गेहे करे शीर्षे कण्ठे च चित्तमध्यके भुजमध्ये च कट्यां वा धारयित्वा महीतले किं न सिद्धिं करोत्येव साधको योगिनी पतिः योगसिद्धिः क्रियासिद्धिः शिवसिद्धिस्तथा परा महासिद्धिः केचरी च सुषुम्ना सिद्धिरेव च फलसिद्धिः कालसिद्धिः क्रियासिद्धिः शिवाम्बिका जङ्गासिद्धिः परासिद्धिः खड्गसिद्धिः सुसूक्ष्मगा अणिमाद्यष्टसिद्धिश्च करे तस्य स्थिरा भवेत् कवचं काकिनी देव्याः सर्वसिद्धिप्रदायकम् अकाले वा सुकाले वा पठनात् धर्मसञ्चयं जयी धर्मसञ्चयेन जयो यत्र शिवस्ततः यत्र शिवा तत्र शिवः कवचात्माद्रयं प्रियौ कर्तारौ तौ सदा तारौ पार्वती परमेश्वरौ कार्यकारणस्रष्टारौ उभौ तत्र परात्परौ कवचात्मकमूर्तौ च स्थातारौ प्रभवात्मकौ तस्य नामाक्षरं वच्ये शृणुष्व भैरवेश्वर भैरवी भीमरूपा च विरूपा रूपवर्जिता सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपा च स्वप्रकाशा च शाकिनी चपला चंचला भीमा चंद्रदेवी परापरा कमलाक्षी देवमाता खड्गकपालधारिणी गुर्वी गौरी गणच्छाया ओंकाराद्या चरुप्रिया छाया जया चांचना च ओंकारात्मा कलावती टंकारिणी डाकिनी च टक्कादेवी ऋणप्रिया तारिणी स्थूलपुष्टा च दया धर्मप्रियानुतिः परमा बुद्धिशक्तिश्च फलदा फल्गुनी कला वसुधारा वासुकी च भद्रकाली भवा भवा मनसा मोहिनी माता यशोदा यज्ञिका यशा रूपेश्वरी रणप्राणा लक्ष्मी लक्षणशोभिता वसुप्रिया वसुरता बालरक्षा शशिप्रभा षडच्चरी शारदा च हरिद्रा हारमालिनी लावण्यनिरता लंका क्षयरोग विनाशिनी चैत्रपाला च चैत्री च क्षत्रिया क्षेमदा क्षमा चुन्निवृत्तिकरी क्षुब्धा क्षालनाख्या क्षराक्षरा आनन्ताख्या उमा दुर्गा वृषभा ईश्वर प्रिया लकार बीजकूटस्था ऋकार दीर्घजीविका ये रंडरण चामुंडा ऐन्द्री टट्टप्रियांतरा तनुतुंडा औषधी च उत्तमादम मध्यमा औद्वेषिणी औषधस्था अट्टहासात्मसंगता अर्थदा अष्टहस्ता च अर्ककोटिमयूखगा अर्धनारीश्वरा अर्चा अर्बुदास्रधरा समा अष्टैश्वर्यपदा अर्धा अंबस्तदा चाप्यरुन्धति अपर्णाख्या अर्कमुनि अपर्णा अस्कलस्थिता अर्चनाढ्या अर्चनास्था अराति अरुणाधरा अष्टोत्तराख्यामृतं पठित्वा कवचं पठेत् तदा फलसमृद्धिः स्यादायुरारोग्य साधनं शाकिनी कवचस्यास्य सदाशिवरुचिः स्मृतः गायत्री छन्द एवापि शाकिनी देहदेवता ॐ श्रीं क्लीं मे शिरः पातु लूं हूं मे ललाटकं चक्षुषी केचरी पातु कर्णौ मे शिवकाकी शाकिनी गण्डयुग्मं सदा पातु देवशाकम्भरी रमा स्वाहा पातु युग्मनासां ओष्ठाधरं शिरोवतु द्रीं ह्रीं श्रीं मे दन्तपङ्क्तिं जिह्नाग्रं देहदेवता चिबुकं कमला देवी वाग्धात्री मे कपालकं वदनं कालिका पातु शब्दबीजात्मिकागलं कण्ठदेवी शाकिनी च पातु मे कण्ठपङ्कजं सुरादेवी सदा पातु ह्यत्पद्मं कामरूपिणी कलावती कामकामा काममाला विशुद्धकं सदा शिवपतं पातु लक्ष्मीर्मेनाभिपङ्कजम् उल्कामुखी सदा पातु देवमाता षडच्चरं सदा पातु विष्णुपद्मं राकिनी पातु मे दलं कटिदेशं सदा पातु भोगदा ज्ञानमोक्षदा मूलाधारं सदा पातु काकिनी परमेश्वरी एकरूपा सदा पातु लिंगाधारं विरूपिणी मार्काण्डपूजिता देवी मृकुण्डा मूलवासिनी सदा मे पातु देवेशी अभयाचारुदेशकं दर्शनाख्या महादेवी लिंगाधारं पदान्तरं पातु देवी हिरण्याक्षी सर्वांगं सर्वदेवता विद्यात्री सूक्ष्मरूपस्था स्थूलांग्री च कृशोदरी
सर्वत्र सर्वदा पातु देवी शाकम्भरी मम ह्यत्कालिका सदा पातु सर्वाङ्गं सर्वदेशके इति ते कथितं नाथ कवचं देवदुर्लभं पठित्वा सिद्धिम् आप्नोति राजत्वं लभते नरः अकस्मात् सूर्यतुल्यः स्यात् कामजेता स्वयं भवेत् धारणात् देहवृद्धिः स्यादायुरारोग्यसम्पदं वायुसिद्धिकरं साक्षात् अमृतानन्दविग्रहम् अग्निस्तम्भं जलस्तम्भं वायुस्तम्भं करोति केचरो योगचेता स्यादाशाक्षयकरो भवेत् ततः पठेत् काममन्त्रं तदन्ते ध्यानमाचरेत् ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पन्त्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् ईशान्निशान्नामुन्म ईशान सर्वलोकम् ईशान जपित्वा काममन्त्रं हि सर्वकामफलं लभेत् ततो ध्यात्वा च कवचं ध्यायेद्यः शाकिनी शिवं स वेदपारमायाति शाकिनी ध्यानयोगतः प्राणाख्यां शुक्लपद्मे निरवधिनिलयां शाकिनीं पीतवस्त्रां सूक्ष्माम्बुशातिरुद्रोत् भवतनुचपलां चञ्चलां सिद्धिलोलां हस्तैः पद्मैश्चतुर्भिः सुनयनकमलैर्भासमानां शिवाढ्यां पद्माभीतिप्रचण्डासी च सहितां शाकमातां भजामि ध्यात्वा योगी श्मशाने गिरिवरकुहरे डाकिनी देशमध्ये शून्ये गर्ते वने वा गगनगृहतले शून्यगेहे स्वप्नवासे ज्ञानात्मा यो वशी वा पठति च सततं शाकिनी देहयोगं गङ्गायां स्वीयगर्भे कवचम् अभयदं सर्वदं याति सिद्धिं कवचं कारणे देवीं पूजयित्वा यथाविधि अकस्मात् कार्यसिद्धिः स्यादष्टैश्वर्यसमन्वितः मोक्षाम् आप्नोति भावेन सुखं तस्य पदे पदे म्रियन्तु बालका यस्याः काकवन्द्या च या भवेत् धारयित्वा त्विमां विद्यामेतैर्दोषणैर्लिप्यते कण्ठे यो धारयेतेतां समरे काण्डधारिणीम् अक्षयत्वमवाप्नोति जीवमात्रः सदाशिवः गोरोचना कुङ्कुमेन काला गुरुहरिद्रया लाक्षारसैर्लेखयित्वा धारयित्वा अमृतं लभेत् इति श्रीरुद्रयामाले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रो दीपने सिद्धिमन्त्रप्रकरणे षट्चक्रप्रकाशे भैरवी संवादे शाकिनी कवचं नाम षष्ठसप्ततितमः पटलः।